My name is Fiona and last video में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डेट पे जाने वाली हूँ and in this video I will tell you what happened in the date as promised. So here I am. बट मेरी लाइफ में कोई मसाला ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता बिकॉज जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ भगवान बोलता है ओ माय गॉड ये खुश कैसे है इसको इसकी किस्मत में खुशी कैसे लिखी है मैंने आई वॉज इन फुल कॉन्फिडेंस और मैं खुद को ही समझाई जा रही थी तू मैनेजर है तुझे अपना एटीट्यूड बना के रखना यू हैव टू लिव अप टू योर और आई वॉज फकिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट द मोमेंट आई सी हिम वॉकिंग स्मेल्स गुड looks decent, good shoes, polite. I mean, also by the way, it was a very fancy restaurant. भाई मैं मैगी खाने वाली औरत हूँ. So I had a full menu blast and I had recited all the menu in my head. Okay. Anyways, we walked to the table. The first thing he does is pulls out the chair, the fucking chair. Excuse me. अंदर ही अंदर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे बट फिर भी मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ब्रो ऑरा है तेरा ऑरा है. इन माई माइंड मैंने 1500 बार खुद को बोल दिया कि आई एम अ मैन हिटर एंड प्लीज लिव अप and please live up to it. Pulling the chair, I mean, हमारे में रिवाज नहीं होता. So we sit, we start talking and we just casually talking and then he compliments. He tells me that I look elegant. He tells me that I look elegant, not beautiful, not hot, elegant. Vocabulary, brother. And I'm not gonna lie, the moment he compliments me, मैंने मेरे बच्चों के नाम सोच लिए थे. We just casually talking, okay. And मैं ऐसे कुछ stories बता रही हूँ and we're just randomly laughing and then the waiter comes up. भाई this guy has not even asked me what I want to have and he has ordered for me. You? Oh, yeah, okay, just make that too. What if मुझे मोमोज खाने है? What if मुझे रामेन खाना है? What if मुझे मैगी खाना है? I mean, okay, it's a fancy restaurant, but मैं तो prepare करके आई थी कि मुझे क्या order करना है. While all this conversation is going on, this guy checks his phone every 7 minutes. वो भी it's not secretly. He's just full brightness mode on और you कर रहा है अपने phone. He's just trying to scroll reels. He's staring at his phone. He's checking his phone as if भाई उसको मोदी जी खुद call करके बोलने वाले hello how are you on a date all the best for your date. Bro, you're on a date. You're not supposed to touch your phone. Do you not know that? I'm telling him a story. उसको बता रही थी कि कैसे मेरे लाइफ में काफी सारी चीजें हुई हैं. And then randomly mid conversation, this guy tells me, "Oh yeah, I already know that." Then why did you ask? Then this guy throws an ultimate red flag signal जो मुझे समझ जाना चाहिए था. मेरी मत्थी कटी गई तो क्यों मैंने ये काम किया? क्यों मैं डेट पे? So I wasn't even over with the last thing that he said, and then he casually mentions his ex. My ex was crazy. My ex did that. My ex did that. So accountability basically left the chat. You are on a date and you're trying to mention your ex. That wasn't enough. Mid conversation, this man tells me, "You are smarter than I thought." Then you thought? You thought? What was the assumption, sir? मेरे दिमाग में ऑलरेडी 1500 चीजें चल रही थी और मैं वहां बैठे बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी और क्यों मैं इस डेट पे. Anyways, if that was not enough, the food arrives. Okay, we start eating. The moment I try to take the first bite और मैं बस यू करके अपने मुंह के पास में वो first bite लेकर आई हूँ. And the moment I do that, he tells me, "Oh, you look really better in real life than on Instagram." So you are trying to tell me that I look ugly online? Choose your words wisely, sir. I was literally on the verge of crying and regretting because वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. I regret and I go on a guilt trip like it's a hobby for me. इतना सब कुछ होने के बाद I leave from there. Just gives me a side hug. As if कोई अचानक से पॉश लगाने वाला है. We leave. I reach home and there's not even one single text from that guy. No reached home safely. No had a great time. Just silence. Nothing. I'm just casually checking my phone to see if he's texted me or not. मैं जितना चाहे चीख के दुनिया को बोलूं कि I'm a man hit, but I am a lover girl inside. You need to get that lover girl out of me. It's not that easy. मैं जितना सोचती हूँ कि मुझे मर्दों को एक चांस देना चाहिए उतना वो प्रूव करते हैं कि मुझे उन्हें चांस क्यों नहीं देना चाहिए. Anyways, that was it for today's video. I'll see you in the next one. Okay, bye.